Regards the return expectation, please be very clear about it. Return expectation is not something which is uniform all over the world. अगर मैं ये रूम में भी सबसे पूछूं कि आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है, तो आई एम 100% श्योर all of you will not give me the same answer. Somebody would say I would be happy with 10%, somebody would say I am happy with 15%, somebody would say I am happy with the bank rate, somebody would say I am happy with the inflation rate, somebody would say I would like to earn 30%. So the return expectations are going to be different for different people, and therefore what can happen, you may have someone whose return expectation is 20%. So someone like Mukesh Ambani, if he has to put his money, he is not going to be satisfied with 10% or 12%. He would like to put his money into a venture where the return that he is going to get is 20%, 30%, 40%. So if somebody is having a return expectation of 20%, remember, for him, this company is worth how much? 10,000. For him, this company is worth 2,500. Are you with me? समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? So that means this person whose return expectation is 20%, वो इस कंपनी को टच नहीं करेगा 5,000 में, वो इस कंपनी को टच करेगा अगर उसको 2,500 में से कम में ये कंपनी मिलती है. So that means for him, the valuation of this company is 5 times of EBITDA multiple. Right. So the value divided by the EBITDA is your EBITDA multiple. EBITDA multiple, value divided by the EBITDA is your EBITDA multiple. That is how you will decide. Okay. नॉर्मली वैल्यूएशन पी वैल्यूएशन पे होता है, वो अलग रहता है. वो अलग है, उसकी मैं चर्चा करूंगा. पी वैल्यूएशन की मैं अलग से चर्चा करूंगा. पर अभी फॉर द टाइम बिंग ये यस लक्ष्मी. या एब्सोल्युटली टोटली डिफरेंट. अब मैं क्विकली कितना एक नंबर सोच लो कि अगर मुझे पैसा लगाना हो तो मैं कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करूँ. जस्ट थिंक वन नंबर इन योर माइंड एंड जस्ट टेल मी दैट नंबर ओनली. 35%. सर लक्ष्मी सर. So you can change the number, sir. Actually, ऐसा नहीं कि 20, 20, 30, 25, 15, 30. So you saw that everyone has, if everyone has the same return expectation, please remember stock market will close the same day. Are you with me what I am saying? है ना, जिस दिन सब लोगों की रिटर्न एक्सपेक्टेशन एक हो गई तो स्टॉक मार्केट बंद हो जाएगा. क्यों बंद हो जाएगा? सबकी एक रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, तो बायर भी नहीं होंगे, सेलर भी नहीं होंगे, बिकॉज सबकी एक रिटर्न एक्सपेक्टेशन है. यस प्लीज.